Hi everyone. Am I audible? Am I audible to you? Hello. What's up? How are you guys? कैसे हो? Hi everyone. Just let me share this link. How was your last day? कैसा था? क्या करना है? थोड़ी सी स्ट्रैटेजी पहले हम देखें या फिर let's directly go into the watch list. Market is about to open next 10 minutes. क्या करना है? Shall we directly go to the watch list and let's look at the stocks? चलो, I'm sharing the screen. Yes, we'll go with the stocks as well. हम बहुत सारे stocks को देखेंगे, but let me show you something. Craftsman Automation looks good. Craftsman was very good stock, but एक move आया था उसमें and I missed that move. I was tracking the stock since Feb. I've made my watch list. I'll share it with you guys. I'll share it with you. VSSL. ठीक है. We'll look for the stocks. हम देखेंगे stocks को. Is my screen visible to you? क्या मेरी screen visible है? Do let me know once. Is my screen visible to you guys? Hey Sanu, had a question. When I place limit order, sometimes the stocks open slightly up, not a big gap up, and I miss on the entry. Yes, screen is visible. Perfect. Dekho, I'll tell you one thing. Whenever you put the GDT orders, you have two options to put up trigger price and put a limit price. ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस के बीच में 1-2 रुपए का डिफरेंस रहने दो, राइट? तो आपके ऑर्डर्स, देर इज अ गुड चांसेस कि आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे. Otherwise, if you will put your trigger and limit price very strict, there's a good chance you may miss on the entry. You may not get that stock. Because understand one thing, आपकी orders तभी पंच होते हैं जब उस सेम प्राइस पे कोई बाय सेलर्स होता है सेल करने को. लेट्स अज्यूम आपने कोई स्टॉक प्राइस का कोई प्राइस डाल दिया है एंड देयर इज नो वन टू सेल, आपके कभी वो ऑर्डर्स पंच नहीं होंगे. लेट मी जस्ट पुट ऑन चार्जिंग. एक मिनट दो. Did you get my point? What I'm trying to tell you? So always have 1 or 2 rupees difference between limit order and your trigger price, right? It will help you कि आपके orders execute हो अच्छे से, right? Perfect guys. Let's go to the screen. Let's move on to the screen. I have shortlisted few stocks. 3-4 stocks मैंने कल रात में shortlist करा है. And you may find this all stocks on a weekly time frame showing a good setup. What strategies do you follow? I don't follow any strategies. I have only one strategy for me, right, which I follow since almost years now. I use simple things. I use breakout and retest. I use supply and demand. I use contractions breakout. Right, you may not find any fancy thing on my trading, but what I look for is, what I generally focus on is whatever the thing what I'm using right now. That should not, make me confused while trading in the market. And I can
use that, I can implement that for good period of time. I don't want to stick to any strategies which I use it for 1 month, 2 months, then I leave it. If I follow any strategies, I try to follow it for years, then only you can find the results. And no strategy is perfect from the first day, Farhan. Remember one thing, no strategies is perfect from the first day. It's all up to you. When you build any strategies, how do you backtest it, how do you journal the data, how do you work with that data, that is ultimately help you to be profitable, or that strategy that will make that strategy profitable. No strategy is profitable from the first day. Even though whatever I'm using, if I would explain it to you, you may not earn money, you may not get good entry, because now I have data, I have my edge on that strategy. What do I mean by edge? Edge means using the same strategies, I know in and out of that strategy, when the strategy fails, when the strategy works, when like I have to take more risk, when I should be defensive on stocks, I should not be trading, when I should be aggressive in the market. This is what the edge means. This is what the edge has to do in your trading. Right, let's look for some stocks which is in my watch list, then we'll talk about this because we have less time. Guys, I've shared my watch list with you on my WhatsApp group as well. Right, if you are here who has not joined my WhatsApp group, I'll show it to you. WhatsApp screen. Can you see this? Can you see this? Right, can you see this? This is the WhatsApp group what I have. I'm trying to make a community of people who trades like me, who trades on the same systems. I've shared the stocks, few stocks, data pattern, SCI, ABSL, and Sirma. We'll discuss the logics. We'll discuss the logics. Arre yaar, where is it? Right. Yes. We'll discuss the logics. Hi, Sugam. Let's go one by one. Right, why did I select its data patterns? The data patterns, I have been tracking this stock since long, and I've explained you a lot of times that this is actually the base what actually is taking my interest. This is a very good base, a perfect rounding base. You can call it as inverted head and shoulder, you can call it as cup and handle pattern, but the logic is यहाँ पे sellers weak with and sellers gave up on this, and the market has given a move, and it has come for the retest, complete breakout and retest करता है. Now it is forming a setup. Actually, now I'll have to look on my daily time frame whether I'm getting the entry or not. Volumes are also good for this stick. On a weekly, there are spikes on weekly time frame. Now let's go on a daily time frame bit to see. देखो, there would be two kind of person. One type of person would be यहाँ पे जिन्होंने already entry बना लिया होगा. You are not wrong, you are correct. But अगर यहाँ पे थोड़ा सा red candle बनता है and if you get any entry at this point as well, then you can consider this stock. Don't miss on this stock. Don't miss. I would say कि भी थोड़ा time लेगा ऊपर नीचे यहाँ पे. It might do because of the move जो आया था and digestion, right? एंड उसके बाद इफ यू गेट एनी pivot कैंडल, एनी पुल बैक और एनी ट्रिगर बार कॉन्ट्रैक्शन, यू कैन एंट्री. यहाँ पे भी किया है आपने अपने एरिया, थोड़ा सा मार्केट को गैप दो, कुछ थोड़े से दिन दो इनको ऊपर नीचे करने के लिए, एंड if that blast, it will give you a good rally and trail this target. Don't put your very strict stop loss or trailing stop loss. Try to hold, try to get the bigger profits in this stock. The first one was the data patterns. The second one was SCI. You can see this wick as well, strong buying pressure. SCI, right? Again, looking on a weekly time frame first. Sri Piston, yes, SCI Sugam. SCI is in my watch list as well. Sri Piston is the same stock. The ticker name is SCI. Craftsman. I'll will look for Craftsman. I'll look for Craftsman. But I'm feeling Craftsman में एक बहुत अभी recent में एक बहुत बड़ा move आया था. I'll go through that stock. मैं एक बार चार्ट देखता हूँ उसका. Did not have a good idea. SCI again base kind of now it is in a retest. जब जब ऊपर जा रहा था, look at the volumes, the stock was showing एक बहुत अच्छे green candle, green volume के साथ इसने breakout करा है. After that, there is a average volume, not much. Earnings भी आए हैं. Now let's go on a daily time frame to see earning दिन क्या होता है. जिस दिन earnings आया था for this stock, the stock gave a strong, strong candle, strong bullish candle. ऊपर गया ट्रैप हो क्या नीचे. ये जिसने भी सिर्फ earnings देख के किया होगा, they might have all hit their stop loss right now. यहाँ पे जिन्होंने होप में बाय किया होगा, ब्रेकआउट आ गया, सभी का स्टॉप लॉस हो गया.
Now it has come down, giving you a proper trigger bar, right? This is exactly when I say यहाँ पे you can have two patterns. What you can look for is, right, or else this is थोड़ा सा risky setup, because अगर आप इसको directly देखते हो, it went up, it came down, and you are getting an entry at this point. The reason why I'm planning, देखो, this stock won't give you fast momentum. At least you'll have to hold this stock for some time. द रीजन बीइंग, यहाँ पे ऊपर में सेलर्स ऐड हो चुके हैं उसको, सो सेलर शुड ट्राई कि ये स्टॉक इसके ऊपर ना जाए, इसके ऊपर ना जाए. बट इफ द स्टॉक मूव्स अबव 337 340 के अगर ऊपर निकलता है, एंड इफ यू गेट एनी एंट्री एट दिस पॉइंट, यू कैन ऐड मोर पोजीशंस. अंडरस्टैंड दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इज कि यहाँ पे जो आप है, आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी अब ऐड बनाना स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट कीपिंग इट इन योर वॉच लिस्ट, एंड व्हेनेवर यू गेट द परफेक्ट एंट्री एट दिस पॉइंट, तो आप इसमें और स्केल डाउन कर सकते हो. Stock is good, numbers are good, I think, for the stock, right? Trend is strong. अभी जस्ट बेस से बाहर भी निकला है, रिटेस्ट में है, वॉल्यूम्स आर गुड, अर्निंग्स भी अच्छे थे इसके. सो दिस इज द सेकंड स्टॉक which is in my watch list. Third is ABSL, right? You might find the same logic in all the stocks. Sri Piston is different stock. चलो, we'll look for that, we'll look for that. एक बार रुको, देखते हैं. देखो, दिस इज व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से क्लीन चार्ट. ये मैंने एग्जांपल्स भी रात में शेयर करे थे. क्लीन चार्ट मुझे यही चाहिए, क्लियर प्राइस एक्शन हो विद गुड वॉल्यूम्स, बेस फॉर्मेशन हो, तो ऐसा नहीं बहुत ज्यादा चॉपी है, ऊपर नीचे कर रहा है. इट शुड फॉर्मिंग अ प्राइस स्ट्रक्चर, ऊपर जाके बेस फॉर्मेशन, अगेन इट शुड वेंट अप. Like that is what a clean chart, that is how the clean chart looks like. There is some problem with the internet, I feel. Yes. Again, with a very, यहाँ पे एक बार बेस फॉर्मेशन था, you can see at this point, इस स्टॉक ने यहाँ पे एक बार बेस बनाया, it went up but did not, went up, and यहाँ पे it formed a base on base structure. This is the base, and again it has formed a base at the top, and अभी ये base से निकला, and it is, forming a perfect retest करके. Now you might get the entry at any point. So start looking for an entry on a weekly, daily time frame. Volumes are good in this base. यहाँ पे भी एक अच्छे वॉल्यूम्स आए. डोंट कंसिडर दिस रेड वॉल्यूम, दिस इज अ बुलिश कैंडल, राइट? देखो, बुलिश कैंडल्स, वॉल्यूम्स जस्ट टेल्स यू इंटेंसिटी, डायरेक्शन आप कैंडल से ही पता कर सकते हो, right? This is the exact stage where the stock is in. I would be interested to start adding my positions after this point, and when, if I get entry at this point, या फिर नीचे आके फिर से मुझे यहाँ पे कुछ मिलता है, तो I would be happy to add more. So this is my plan basically, right? This is my plan for these stocks. Perfect guys. हाँ, you got the pre-market open. Almost सभी stocks अभी बहुत, ना ही बहुत ज़्यादा strong, नहीं ज़्यादा weak है, sideways market है. Start looking for your watch list, and कोई idea होता है, कोई plan होता है, तो you can do. Yeah, how much would your mentorship be worth if you didn't have as much capital as you said? देखो, Vipin, right? That is first of all a fellowship where I'll be working one on one with you. ठीक है, तो the thing is कि if you don't have capital, आप almost 50-60 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हो, 6 महीने तक काम करते हो, पूरे सिस्टम बिल्ड कर लोगे, आप सभी चीजें कर लोगे, एंड उसके बाद आपके पास कैपिटल ही नहीं है स्केल डाउन करने के लिए. व्हाट विल यू डू विद दैट नॉलेज? आप क्या करोगे उस नॉलेज का? आप अगर कहीं पे कोई चीज इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो, तो यू सी द आरओआई, राइट? तो यू नीड टू लुक फ्रॉम दिस माइंडसेट कि सानू भाई, मैं अगर पैसे डाल रहा हूँ आपके मेंटरशिप या फेलोशिप या कुछ भी आपके साथ वर्क करने के लिए, मैं अगर पैसे उसमें डाल रहा हूँ, तो विल आई गेट दैट आरओआई? क्या मैं सब कुछ बिल्ड करने के बाद भी, क्या मेरे पास कैपिटल है कि मैं उतना बना पाऊँ? यू कांट बी मेकिंग गुड मनी विद 50,000 1 लाख कैपिटल. दैट इज इनिशियली गुड. मैंने ये कभी नहीं बोला कि आप सीख नहीं पाओगे, आप सीख लोगे सब कुछ, बट सीखने के बाद आप करोगे क्या उस नॉलेज का? और धीरे धीरे व्हेन यू विल बी इनकंसिस्टेंट, आप सभी चीजें भूल जाओगे, एंड देयर विल नॉट बी गुड वर्थ ऑफ दिस.
हम दो स्टॉक देखते हैं, एक श्री पिस्टन देखते हैं. आई वॉज लुकिंग दिस स्टॉक, मैं रात में देख रहा था इसको. श्री पिस्टन को एंड क्राफ्ट्समैन VSSL देखते हैं. विल लुक फॉर द स्टॉक्स. SPR ऑटो, इज दैट द स्टॉक? सो मेरे को बताना, इज दैट द स्टॉक SPR? वेरी क्लीन पैटर्न, बहुत अच्छा फॉर्मेशन है. द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट मेकिंग पोजीशंस इन द स्टॉक. बेस्ट टाइम. यू आर गेटिंग एट द डिस्काउंट. वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं. एट एंड रिसेंटली अर्निंग्स के बाद द स्टॉक हैज नॉट बीन बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं आपको देखने को मिला है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग. देर इज ऑलवेज अ फाइट गोइंग ऑन. ब्रेकआउट आया, काइंड ऑफ रीटेस्ट आया. अंडरस्टैंड वन थिंग, देखो यहाँ पे इफ यू ऐड पोजीशंस यू मे नॉट गेट फास्ट मोमेंटम. अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे सेलर्स है. तो एवरी टाइम यू विल गेट अ विक, और आपका कैंडल ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इट वुड गो साइडवेज. राइट. तो स्टार्ट एडिंग योर पोजीशंस, दैट इज द परफेक्ट टाइम. बट उसके बाद एटलीस्ट यू मे एक्सपेक्ट अ मोमेंटम. अगर आपको कैप्चर करना है तो यू मे एक्सपेक्ट आफ्टर दिस पॉइंट. अगर यहाँ पे बना है तो वो जाएगा. राइट. सो यू कैन स्टार्ट एडिंग पोजीशंस. यहाँ पे आप ज्यादा ऐड कर सकते हो. सो योर एवरेज यू विल गेट अ गुड प्राइस. राइट. दिस स्टॉक शुड बी इन वॉच लिस्ट. चलो, I'll put that. Yes, you are right. But first, you can start with 50K. Once I make money, I can come with big capital. If I can come, I will at least learn how I can make money. ठीक है विपिन, मतलब व्हाट आई कैन से, अभी मैं क्या बोलूँ. यू कैन टॉक टू द टीम. राइट. आप मेरे को, इफ यू आर इन माय व्हाट्सएप ग्रुप, आप मेरे को मैसेज कर देना. आई विल शेयर योर नंबर विद माय टीम. दे विल कॉल यू, दे विल क्वालिफाई यू, दे विल आस्क यू कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे वो. एंड इफ दे फील गुड दे विल book arrange a call with me. Right, because that's not in my hand, that's their domain. वो चीज़ों को करते हैं. I generally don't focus on that. So if they feel you're the good fit, we are the good fit, right? तो आपको वो मेरे साथ वन ऑन वन कॉल पे लाएंगे. एंड आफ्टर दैट इफ एवरीथिंग अलाइंड विल स्टार्ट दिस. जैसा हाउ द प्रोसेस इज, दैट्स द रीजन मैंने इस तरीके का प्रोसेस रखा है. बिकॉज आई डोंट वांट, आई हैव वर्क विद पीपल यार, जिसके पास नहीं था कैपिटल, या फिर वो उतना सीरियस नहीं था. एंड टाइम चला जाता है मेरा. Every alternate days I'll be sitting, every Sundays I'll be sitting with you. इतना टाइमिंग, इतना दिमाग लगाना, इतना कॉन्वर्सेशनल पूरी सेशंस लेना, उसके बाद इफ इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी वर्थ तो नहीं है. Fee, when it would be somewhere around, you can expect that 50 to 60,000. It's customizable, but between somewhere 50 to 60,000 for the complete 6 months, 3 months. There are different things, right? You can talk to the team; they will guide you with this. वो आपको बता देंगे. Perfect guys. क्राफ्ट्समैन एक बार देखेगा. मार्केट ओपन वाला है. आई फील कि मैं थोड़ा सा शांति से अगर मैं कर पाऊंगा एग्जीक्यूशंस तो इट वुड बी परफेक्ट. गिव मी सम टाइम, विल डिस्कस. क्राफ्ट्समैन, गुड गुड, वेरी गुड सेटअप. क्राफ्ट्समैन में बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है. Clean pattern, breakout, retest on daily time frame. Craftsman is a good stock, guys. You can keep this stock in your watch list. Craftsman looks really good. Craftsman looks really amazing. Right, you can have this stock in your watch list. I'll share it in the group as well. Craftsman, good stock selection. Craftsman is good stock. Right. Perfect. See you guys. मिलते हैं कल. Right. And all the best. Trade properly. Have a proper risk management. See you all tomorrow. Goodbye. Take care.